Hello students, welcome back to our another lecture. In this lecture we are going to see the production of dairy related terms, that is cheese and yogurt. Cheese and yogurt, these are the food and dairy related terminology. So the main ingredient for the production of cheese and yogurt is milk. The main starter culture used in this yogurt and cheese production is Lactobacillus bulgaris and Streptococcus thermophilus. The main organism is Lactobacillus, which is commonly found in the milk. Let's start with the production of the cheese. Now, first of all, what is cheese? Okay, before seeing the production we will see that what is cheese. So cheese kya hai? Cheese, it is the milk based food product and can be used in the wide range of the flavors. So that is the main cheese. In other terms, if we will see the definition of cheese, then it is a food made from the pressed curds of milk, firm and elastic or soft and semi liquid in texture. Okay, so that is just the simple definition of cheese. कर्ड्स को प्रेस किया जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी सॉलिड बनाई जाती है, फर्म बनाई जाती है, सॉफ्ट बनाई जाती है, एंड इट इज सेमी लिक्विड इन द टेक्सचर, दैट इज नोन एज द चीज. Okay, so cheese is the consumed food material which is rich in protein content, in fat content. Okay, because cheese का जो primary raw material है वो है milk. So milk, it is rich in the proteins and fats. Okay, so that is the introduction about the cheese. The organisms which are used in the production of the cheese are like lactic acid bacteria, which are used as the starter culture, means it may be lactococci, lactobacilli. Okay, next organism which is used is propionic acid bacteria. Now propionic acid bacteria like Propionobacter shermani is there. Okay, that slides वो नोट यहाँ पर है. Okay, Propionobacter shermani is there. What it does, this bacteria, it digests the acetic acid and convert this acetic acid into propionic acid and carbon dioxide. तो propionic acid क्या है? This is very sweet smelling acid. So propionobacterium, propionobactic acid bacteria भी use कर सकते हैं for the production of the cheese. Okay, next molds are also be used. Penicillium molds are used for the production of the cheese. Now let's start with the production of the cheese by using the fermentation technique. Now we will come to the flow sheet diagram directly. तो ये है flow sheet diagram of the cheese making or production of the cheese by using the fermentation technology. Now the chief ingredient of cheese is milk. Okay, cheese is manufactured using cow, goat, sheep, water, buffalo or blend of this milk. The first step in the production of cheese is milk, collection of the milk. Okay, first collect the milk, standardize that milk or stabilize that milk. Okay, आप milk को standardize करेंगे या फिर stabilize करेंगे. Standardize या फिर stabilize मतलब क्या? By using the stabilizers like gums, fibers. Okay, you will stabilize, that means they are responsible for adding viscosity. It make the milk in the thick viscosity. Okay, so we use the stabilizer. Okay, next step is the milk pasteurization. Now milk pasteurization is the technique where pathogenic organisms which are not useful, that pathogenic microorganisms are being killed at high temperature for the short time. Okay, means 72 degrees Celsius for 15 seconds or low temperature for long time, means 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 13 मिनट. ओके, फिर पास्चराइज किया जाता है मिल्क. स्टैंडर्डाइज होने के बाद पास्चराइज में पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स किल किए जाते हैं. ठीक है, तो मिल्क में कोगुलेंट फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है. ओके, द टाइप ऑफ कोगुलेंट यूज्ड इन द चीज़ मेकिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द चीज़ यू हैव टू मेक. कोगुलेंट मतलब इट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू कोगुलेट.
okay, to become the thick, that is known as the coagulant. okay, तो coagulate मतलब क्या, coagulate it forms the, we can say, वो एक पार्टिकल फॉर्म करते हैं, कोलाइडल स्ट्रक्चर लाइक फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज द कोगुलेट. ओके, इट बिकम, मतलब मिल्क उससे ठीक होता है, लार्ज कोलाइड्स फॉर्म करते हैं, दैट इज लार्ज कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज द कोगुलेंट. ओके, सो मिल्क पास्चराइजेशन होने के बाद, मीन्स बॉयल होने के बाद, वी अलाउ दैट मिल्क टू कूल फॉर द सर्टन टाइम. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं बताना भूल गई आपको. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़, जैसे कि एसिड चीज़ होता है, रिनेट चीज़ होता है. एसिड चीज़ में एन एसिड सोर्स लाइक एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है. रिनेट चीज़ में काफ रिनेट यूज़ किया जाता है. ओके, रिनेट क्या है? रिनेट, इट इज़ एन एंजाइम विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द stomach lining of young calf, or it can be obtained from plant, fungus और microorganism. ओके, तो ये है रिनेट. रिनेट का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द complex, means renate, it is the complex set of enzyme which is produced in the stomach. Okay, so that is the renate. It helps to, when we add the renate, it helps to convert the liquid milk into the solid milk. Okay, तो ये renate का function है, it converts solid milk into the liquid milk. Okay, प्लस आप कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड कर सकते हो इनटू द चीज टू एनहांस द कोगुलेशन प्रॉपर्टी, मीन्स टू कन्वर्ट इट इनटू द सॉलिड, टू एनहांस द कोगुलेशन प्रॉपर्टी. प्लस आप फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड कर सकते हो. ओके, सो दिस आर द सर्टन इंट्रोडक्शन ऑफ cheese which I have forget to tell. Okay, we'll come to the procedure once again. मिल्क स्टैंडर्डाइज किया जाता है, पास्चराइज किया जाता है, एंड देन आफ्टर पास्चराइजेशन इट इज अलाउड टू किल. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज इनोकुलम ऑफ स्टार्टर कल्चर. ओके, स्टार्टर कल्चर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. तो स्टार्टर कल्चर हम कौन सा यूज कर सकते हैं? लैक्टोबैसिलस यूज कर सकते हैं. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम एज अ स्टार्टर कल्चर यूज कर सकते हैं. ओके, मीन्स वी आर एडिंग द इनोकुलम. ओके, दैट इज नोन एज द स्टार्टर कल्चर. ठीक है, क्या करेगा स्टार्टर कल्चर? लिक्विड, इट विल कन्वर्ट द लिक्विड मिल्क, और इट विल कन्वर्ट लिक्विड कल्चर इनटू द लैक्टिक, मीन्स अभी मिल्क है. ओके, मिल्क इट इज इन द लिक्विड फॉर्म which contains the lactic acid bacteria. Okay, which contains the lactobacillus, then it will convert it into the दैट लैक्टोज शुगर, जो मिल्क में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, वो लैक्टोज शुगर कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में. ओके, मीन्स इन द एसिडिफिकेशन फॉर्म. इसीलिए इस स्टेप को आप एसिडिफिकेशन स्टेप भी बोल सकते हैं. ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनोक्यूलेटिंग द स्टार्टर कल्चर. ओके, स्टार्टर कल्चर मतलब हम ऑर्गेनिज्म इनोक्यूलेट कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलस. तो मिल्क में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेंगे? इट विल कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इनटू द लैक्टिक एसिड, मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द एसिड. ओके, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द एसिडिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज राइपनिंग. अभी यहाँ पर क्या होता है? केसिन कोगुलेशन प्रेजेंट होता है मिल्क में. ओके, देयर इज केसिन प्रोटीन इज बीन प्रेजेंट इन द मिल्क. ओके, सो दैट केसिन इट कोगुलेट. ओके, कोगुलेट मतलब मैंने आपको बताया कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म होते हैं. Then we add the renate and there is curd formation. I have told you the function of the renate. It helps to convert the liquid milk into the solid milk. Okay, and then there is once the solid structure is been formed, casein protein जो होता है milk में, it will coagulate and milk is solidified. Then after coagulation, what happens? After coagulation we stir that. Okay, after stirring, that solidified milk is converted into the curds. Okay, curds में convert होता है, मतलब छोटे छोटे granules form होते हैं, और कर्ड्स में जब वो कन्वर्ट होता है, जो लिक्विड रिमेनिंग है वो भी निकल जाता है. ठीक है, एंड देन वी ड्राई इट. कर्ड टेक्सचरिंग होता है, देन वी ऐड सॉल्टिंग होती है, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम ऐड करते हैं. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द चीज़.
Okay, then that blocks are allowed to store or refrigerate, and then there is packaging of that slices or of that we can say cheese blocks. Okay, तो ऐसी है चीज़ प्रोडक्शन की मेथड. वंस अगेन हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि क्या है प्रोडक्शन ऑफ द चीज़. सबसे पहले मिल्क कलेक्ट किया जाता है. ओके, मिल्क स्टैंडर्डाइज किया जाता है या फिर स्टेबलाइज किया जाता है. स्टेबलाइज हम बाय एडिशन ऑफ द गम्स और द फाइबर्स करते हैं. स्टेबलाइज मतलब मिल्क की विस्कोसिटी थिक करना. ओके, सो आफ्टर स्टेबलाइजेशन मिल्क पास्चराइज किया जाता है. पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स और अनरिक्वायर्ड ऑर्गेनिजम्स आर बीन किल्ड बाय heat treatment. Then the milk is allowed to cool. There is addition of the starter culture or inoculum. Okay, starter culture में क्या होता है, lactose present in the milk is converted into the lactic acid by the help of the lactobacillus bacteria. Okay, that process is also known as acidification. Okay, then we add the rennet. Okay, it will convert liquid milk into the solid milk. The casein protein which is present in the milk, it helps to coagulate, means it helps to convert the milk in the solidified form. Okay, after coagulation we stir the milk, then that solidified milk is converted into the curds. Okay, then we add the salt into the curd, that is known as the salting process. Then there are formation of the cheese blocks, then we store and packaged or we pack that cheese blocks. Okay, so ऐसे किया जाता है production of the cheese. Let's come to the next point, that is commercial production of the yogurt. Okay, now yogurt it act as the probiotics. Okay, yogurt ये एक बहुत main source है of the probiotics का. It is the dairy product produced by the bacterial fermentation of the milk. Okay, it is necessary for the growth. It increases or it boosts your immune system. The microorganisms which are used for the production of the yogurt is lactobacillus and streptococcus. Okay, तो lactobacillus और streptococcus thermophilus यूज किया जाता है. Then there are different types of milk from which yogurt is been produced, like whole milk है, low fat skim milk है. whole milk means what, the milk which contains the fat. Okay, उसमें से कोई भी fat निकाला नहीं जाता है, so it is known as the whole milk. skim milk होता है cream. Skim milk is the milk from which cream has been removed. Okay, so that is known as the skimmed milk. तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिल्क जिससे हम योगर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मिल्क द योगर्ट कंसिस्टेंसी इज बिन डिपेंड और द योगर्ट इज बिन प्रोड्यूस्ड. ओके, सो ऑल योगर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 8.25% सॉलिड बट नॉट फैट. ओके, ये एक कंसिडरेशन और ये की पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इसमें. So let's start with the production of the yogurt. So we will come to the flow sheet diagram. ठीक है, तो this is the flow sheet diagram for the production of the yogurt. Okay, so first is you have to collect the milk. Okay, raw milk here, it acts as the raw product. देन मिल्क कंपोजिशन एडजस्टमेंट एंड ब्लेंडिंग इंग्रेडिएंट्स, मतलब आप मिल्क कलेक्ट करेंगे, उसे स्टेबलाइज करेंगे. ओके, बाय एडिंग द स्टेबलाइजर्स लाइक गम्स एंड द फाइबर. ओके, अब यहाँ पर प्राइमरी मेटाबोलाइट मिल्क है. ओके, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट योगर्ट है. मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दैट इज योगर्ट. वी कलेक्ट द मिल्क, वी स्टेबलाइज इट बाय एडिंग द स्टेबलाइजर्स. Then we pasteurize that milk. Pasteurization मैंने आपको प्रीवियस में बताया, चीज़ प्रोडक्शन में बताया. पास्चराइजेशन इज द टेक्निक वेयर वी किल द हार्मफुल और अनरिक्वायर्ड ऑर्गेनिजम्स. वाई पास्चराइजेशन इज डन? द फर्स्ट reason for pasteurization is for killing the harmful microorganism. Okay, second reason is means heat at 85 degrees Celsius or 75 degrees Celsius for 30 minutes depend on the temperature. मतलब अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो तो कम टाइम, और अगर आप कम टेम्परेचर दे रहे हो तो ज़्यादा टाइम. ठीक है,
Then second reason is for denaturation of the proteins, and third reason is some proteins are required, like casein protein is required to form the stable gel. Okay, so वो protein kill ना हो, for that we use this pasteurization technique. Okay, so pasteurization is been done. Next process is the होमोजिनाइजेशन. ओके, अभी होमोजिनाइजेशन में क्या किया जाता है? होमोजिनाइजेशन वी कूल द मिल्क एंड वी डिक्रीज द टेम्परेचर. अगर आपने पास्चराइजेशन में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है तो वी डिक्रीज दैट टेम्परेचर. ओके, एंड इन होमोजिनाइजेशन ऑल द इंग्रेडिएंट्स, the blend is homogenized to mix all the ingredients thoroughly and enhance the कंसिस्टेंसी ऑफ द योगर्ट. मतलब मिक्स किया जाता है टू फॉर्म द होमोजिनाइज्ड मिक्सचर, मतलब कोई ग्रैन्यूल्स ना रहे. ओके, सो वी डू दी होमोजिनाइजेशन प्लस मिल्क कूल करके उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है. एंड देन वी इंट्रोड्यूस दिस इनटू द फर्मेंटर टैंक. ओके, वो मिल्क हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द फर्मेंटर टैंक. फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट एट सर्टन टेम्परेचर, दैट इज 42 डिग्री सेल्सियस, और pH मेंटेन किया जाता है 4.5. देन वी ऐड दी स्टार्टर कल्चर इनटू दैट फर्मेंटर टैंक. स्टार्टर कल्चर मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं. ठीक है, इनोकुलेशन विद द स्टार्टर कल्चर, देन इट मे बी लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस. ओके, देन वी अलाउड टू कूल दैट, हम कूलिंग करते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द फर्मेंटेशन प्रोसेस. द योगर्ट इज बीन cooled. Okay, cooled to 7 degree Celsius. Then we add some flavors and fruiting, means fruit and flavor क्या करते हैं? Fruit and flavors are added at various step, depend on the type of the yogurt which we are producing. Okay, so flavors are being added and finally योगर्ट फ्रीज किया जाता है इफ़ यू वांट टू स्टोर फॉर द लार्ज पीरियड, एंड देन इट इज़ अलाउड फॉर द पैकेजिंग प्रोसेस और टर्न इनटू द पैकेजिंग प्रोसेस. द योगर्ट इज स्पर्म फ्रॉम द फर्मेंटेशन वैट एंड देन दे आर packed. Okay, so like that yogurt is been prepared. Okay, it is very simple and very easy technique to prepare the yogurt. Even our mother also prepares the yogurt in a very, even she don't know that how to make the, she has not studied the microbiology or she had not gone to any industrial, but still she knows, she used the starter culture to make the योगर्ट. सो दैट स्टार्टर कल्चर, जितना पुराना स्टार्टर कल्चर होगा उतना ज़्यादा आपकी दही अच्छी होगी, योगर्ट अच्छा होगा. तो आप स्टार्टर कल्चर मिल्क में डालते हैं, थोड़ा सा स्टार्टर कल्चर आप डालते हैं, 1 टीस्पून इज सफिशिएंट, 1 और 2 टीस्पून इज सफिशिएंट फॉर द स्टार्टर कल्चर डिपेंडिंग ऑन द मिल्क. आप स्टार्टर कल्चर डालते हैं उस मिल्क में, उसे स्टर करते हैं और कुछ टेम्परेचर में या फिर उसे वार्म कंडीशन मिले, ऐसे वार्म कंडीशन में आप वो दूध विद द स्टार्टर कल्चर फर्मेंटेशन के लिए रख देते टिल ओवरनाइट, और सुबह आपको उस मिल्क का कन्वर्जन दही में दिखता है. सो इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द योगर्ट. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द योगर्ट. Now we will come to our last chapter, last point, that is sources and precautions of the industrial contamination. Means what are the sources of the contamination और हम कैसे precautions ले सकते हैं, ये हम इस point में study करेंगे. ये बहुत simple point है, logical point है to understand. Now how the contamination occurs in the laboratory. There are various reasons for the contamination which takes place at the industrial level या फिर फर्मेंटेशन जब प्रोसेस कैरी आउट होती है तो बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे पहले जब आप स्टार्टर कल्चर बनाते हो लैबोरेटरी में, तो लैबोरेटरी क्लीन है या नहीं, स्टराइल है या नहीं, वो जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो स्टराइल है या नहीं. स्टॉक कल्चर विच यू आर यूजिंग फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, दे शुड बी रेगुलरली चेक. ओके, फॉर द अनवांटेड प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं चाहिए. जो आप फ्लास्क, फर्मेंटर, मीडिया, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे, आप देखिए कि वो प्रॉपरली वॉश्ड है या नहीं, स्टरलाइज्ड है या नहीं. ठीक है,
और जो पर्सन ये सारे टेक्निक्स परफॉर्म कर रहा है, ओके, द टेक्निक ऑफ द पर्सन who inoculates the flask should be checked regularly. ओके, सो दिस आर द स्टेरिलिटी चेक की जाती है, एरिया की करनी चाहिए. यू मस्ट मेंटेन द प्रॉपर हाइजीनिक एंड क्लीन कंडीशंस सो दैट कंटामिनेशन हो ना. ओके, और कंटामिनेशन अगर हो रहा है तो इट मस्ट बी इन अ वेरी लो और एट अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट. सो लैबोरेटरी एक उसका एक सोर्स हो सकता है. Second source is raw material. All the raw material should be purchased in a finely ground form. Why in the finely ground form? Because अगर ग्राउंड फाइन ग्राउंड फॉर्म में होंगे, फाइन पार्टिकल्स में होंगे, होमोजिनाइज्ड होंगे, तो वो प्रॉपरली फर्मेंटेशन मीडिया में मिक्स हो सकेंगे. ओके, अगर उसके ग्रैन्यूल्स होंगे, लार्ज साइज के कोलाइडल स्ट्रक्चर होंगे, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द फर्मेंटेशन मीडिया. ओके, एंड प्लस इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द फोम. तो आप जितना हो सके उतना फाइन अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ कीजिए. ठीक है, सो रॉ मटेरियल पे भी कंटैमिनेशन डिपेंड होता है. नेक्स्ट इज द कंटैमिनेशन फ्रॉम द इक्विपमेंट. Contamination from the equipment means you have to check that there is no any leakage in the fermenter vessel. Okay, तो आप रेगुलरली चेक कीजिए फर्मेंटर वेसल प्रॉपरली क्लोज्ड फॉर्म में है या नहीं. ओके, द इनसाइड टैंक फिटिंग लाइक इंस्ट्रूमेंट, बल्ब्स, गॉस, स्पार्जर्स, ये सब चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, या फिर प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं. दैट ऑल यू हैव टू चेक. Plus you sterile air system, the packaging, the condition of the filter lines should be checked at the regular time period. Okay, before running out the fermentation process, ये सब चीज़ें चेक करना ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ही इसेंशियल है. ओके, जस्ट टू प्रिवेंट द कंटैमिनेशन. देन यूर मॉनिटरिंग पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, डीओ, ये सब चीज़ें प्रॉपरली चेक करनी चाहिए. थर्मोमीटर अगर आपने प्लेस किया है इनटू द फर्मेंटर टैंक, सो इट मस्ट बी चेक दैट इज नॉट कंटैमिनेटेड, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं. तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू अवॉइड एंड प्रिवेंट द कंटैमिनेशन इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस. Okay, so contamination due to operating procedures means to at the performing also you have to check whether all the systems are running in the definite and proper manner or not. मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है. तो ये सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंटामिनेशन होता है इनटू द इंडस्ट्रियल लेवल. तो ये सारी चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे, ओके, अगर ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तो वी कैन प्रिवेंट 99.99% ऑफ द कंटैमिनेशन. और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी इन अ प्योर फॉर्म. ओके, जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हम करते हैं, या फिर जो हम कंडीशंस रिक्वायर्ड जो मेंटेन करते दैट, उससे हमें ज़्यादा फोर्स नहीं देना पड़ेगा अगर हम पहले से ही कुछ स्टेरिलिटी कंडीशन मेंटेन करते हैं तब. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द चीज, योगर्ट एंड द sources and precautions which of industrial contamination. So in this way we have completed our fermentation point, okay, or fermentation credit. So thank you.